Hi everyone, so welcome to the another lecture of this series, and today we are going to talk another market maker trap, which is your false breakout. Now if you remember previously we discussed about the pole and flag pattern, किस तरह से retailers trap होते हैं उसमें. Today we are going to talk about the false breakout. Usually इसमें क्या होता है, जो भी नए traders आते हैं उनको बताया जाता है कि there is a consolidation if in the market, so this is basically Darva's box, right? But इसके बारे में properly in depth किसी को पता नहीं होता है कि rules क्या है, मार्केट में क्यों ये वर्क करता है, कब नहीं करता है. रिटेलर्स नो दैट कि अगर कंसोलिडेशन हो रहा है इस तरह से एक टाइट रेंज में, जो भी साइड पे मार्केट ब्रेक करेगा, बीट ऑन दी अपसाइड और बीट ऑन अ डाउन साइड, मार्केट उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, राइट. तो इसके पीछे का लॉजिक बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे अगर सपोज शॉर्ट कवरिंग अगर आती है तो मार्केट में सारे शॉर्ट्स कवर होंगे और मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगा, और लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो मार्केट क्या करता है, डाउन साइड पे डिक्लाइन करेगा. बट रिटेलर्स क्या करते हैं, हर जगह पे कंसोलिडेशन फाइंड करते हैं विदाउट एनी कंटेक्स्ट. मार्केट का एक्चुअली ऑर्डर फ्लो क्या है, किस डायरेक्शन में, दे डोंट लुक एट दैट मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है. दे जस्ट सी दैट के मार्केट में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, जहाँ पे ब्रेकआउट अगर होता है वहां पे हम लोगों को ट्रेड प्लान करना है, और उसी जगह पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं. सो बेसिकली या तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है या तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है. अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है और वो फॉल्स ब्रेकआउट हो तो उस केस में हम लोग को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फॉल्स ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो यूजुअली ये कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, जब मार्केट बेरिश हो. अगर मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है एंड देयर इज अ कंसोलिडेशन इन अ पर्टिकुलर रेंज, और वहां पे अगर हम लोग को अपसाइड पे ब्रेकआउट मिलता है, दैट मीन्स इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट, और वहां से मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड पे. सेम गोज फॉर दी ब्रेकआउट बिलो. अगर मार्केट की कंडीशन बुलिश है, मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूव कर रहा है और एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करके डाउन साइड पे अगर ब्रेकआउट दे तो इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड मार्केट विल कंटिन्यू ऑन अ हायर साइड. सो दीज आर दी बेसिक कंडीशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, मार्केट का ट्रेंड क्या है या ऑर्डर फ्लो क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस तरफ पे फॉल्स ब्रेकआउट आ सकता है. सेकेंडली व्हाट इज बेसिकली अ कंसोलिडेशन, क्या होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मार्केट ने एक हाई बनाया एक लो बनाया तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, मार्केट उसी रेंज में क्या करता है, टाइटली कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है. इवन इफ इट्स मूविंग ऑन अ हायर साइड विल ट्राई टू कम एट द इक्विलिब्रियम, और इट इज मूविंग ऑन अ डाउन साइड विल ट्राई टू कम एट द इक्विलिब्रियम, और एक टाइट रेंज में मार्केट घूमता है. दिस इज हाउ अ मार्केट कंसोलिडेट इन अ रेंज. जो न्यूबीज ट्रेडर होते हैं या ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, व्हाट दे सी के एक मार्केट में हाई बन गया है और एक मार्केट में लो बन गया है, और उनको एक हाफ बेक नॉलेज है डार्वास बॉक्स के बारे में या जो भी कंसोलिडेशन के बारे में, और वो लोग रुकते हैं कि प्राइस में अगर ब्रेकआउट अगर हो गया तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और ब्रेकडाउन अगर हो गया तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे. तो यूजुअली क्या होता है, ऊपर की तरफ बाय स्टॉप्स रहते हैं. अब दो लोगों के बाय स्टॉप्स है, अगर जिसने यहाँ से शॉर्ट किया मार्केट को उनके स्टॉप लॉस है तो दे आर हैविंग अ बाय ऑर्डर्स ओवर हियर, और कुछ जो ट्रेडर्स है जो वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट पे हम लोग बाय करेंगे, राइट. सिमिलरली डाउन साइड पे भी क्या होता है, जो लोगों ने यहाँ से लॉन्ग किया है मार्केट को उनके स्टॉप लॉसेस है, दे विल लुक टू सेल ओवर हियर, और यहाँ पे ब्रेक डाउन पे जो भी ट्रेड प्लान करेंगे वो भी यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स प्लेस करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली बाय ऑर्डर्स है, बाय स्टॉप्स है, और यहाँ पे क्या है, सेल स्टॉप्स है. नाउ इमेजिन अगर मार्केट का ट्रेंड अगर बेरिश है, राइट, तो मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए इंस्टीट्यूशन को सेल करना है. तो वो सेल कहाँ करेंगे, सेल जब करेंगे जब उसके अगेंस्ट उनको बाइंग ऑर्डर्स मिलेंगे, और बाइंग ऑर्डर्स कहाँ पे है, इसके ऊपर है. तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट आएगा, सारे बाय स्टॉप्स है, बाय ऑर्डर्स है, वो फिल होंगे अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन सेल ऑर्डर, और फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड पे जो एक्चुअली उसका ओरिजिनल ट्रेंड था. सेम गोज कि अगर मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड अगर बुलिश है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो नीचे की तरफ पे क्या है, हमारे पास सेल स्टॉप्स है. तो मार्केट मेकर विल ट्राई टू सेंड द प्राइस बिलो द रेंज टू न्यूट्रलाइज दीज सेल स्टॉप्स, और वो सेल स्टॉप्स हंट होने के बाद मार्केट विल कंटिन्यू ऑन अ हायर साइड. सो दिस इज हाउ अ फॉल्स ब्रेकआउट अबव और अ फॉल्स ब्रेकआउट बिलो अ फॉर्म इन द मार्केट आफ्टर अ प्राइस कंसोलिडेशन. और उसके लिए आपको कंडीशन पता होना बहुत जरूरी है कि मार्केट का एक्चुअल कंडीशन क्या है, वेदर इट इज bullish or a bearish market. Now here we have a chart of a crude oil on a 15-minute time frame, and if you just look at this particular part, after moving on a downside मार्केट में एक लो फॉर्म हुआ और मार्केट में एक हाई फॉर्म हुआ, और इसी रेंज में मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करने लगा विद इन दिस हाई एंड विद इन दिस लो. तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्राइस कंसोलिडेशन रेंज फॉर्म हुआ जिसमें इसके ऊपर क्या है, वी हैव बाय स्टॉप्स, और इसके नीचे क्या है, वी हैव सेल स्टॉप्स. मार्केट मेकर ने क्या किया, एक डाउन साइड पे इम्पल्स डाउन मूव लाया, जितने भी इसके नीचे सेल स्टॉप से सेल ऑर्डर थे सारे ट्रिगर हुए. आफ्टर टेकिंग आउट दिस मार्केट वेंट अप फॉर these high to neutralize this buy stops, right? So we had this price consolidation from this low to this high, and below this there was a
ट्रैप ऑन अ डाउन साइड, तो दिस वाज अ ब्रेक डाउन बिलो, और यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स प्लेस हुए सीइंग दिस डाउन मूव, प्राइस रिट्रेस बैक। इवन ऑन दिस रिट्रेसमेंट मेनी ट्रेडर विल थिंक इट एज अ रिट्रेसमेंट, और सारे के सारे जो सेल स्टॉप्स थे सेलर से ट्रैप हो गया, मार्केट मूव ऑन टू टेक दीज हाइज ओवर हियर, राइट। आफ्टर टेकिंग आउट दिस हाई, मार्केट फिर से पुल बैक लेता है और एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज में घूमने लगता है। सो अगेन वी हैव अ कंसोलिडेशन ओवर हियर from this high to this low. You can clearly see market is trading within a range over here, and after this you can see a small spike below this consolidation low. So this was again a breakdown below this price, taking out the liquidity on the sell stops, and again market targeted to these high, and also we have equal highs over here. You can see these highs, so market was targeting for these highs along with these old highs and these swing highs over here, right? Now after taking out these high, you can clearly see market में एक retracement हुआ, right, below this. So again we were consolidating in this range from this low to this high. You can see price was spending time in this range and again coming back into the equilibrium, and after that we have this rundown below this consolidation range box which we have seen over here, and after taking out these low, market again went up to take out these highs over here, right, over here. So these high were taken out first over here, and after that we went to take out these low, and उसके बाद again price ने क्या किया, ये high hunt किया. Now again if you will just see, after taking out this high, market retraced back again and it was trading within this range over here. You have this high और ये एक low था, price इसी एक range में घूम रहा था, we have right over here. So we'll mark this range again. From this low to this high, we were trading within this range. Again after a price consolidation, we saw a nice rundown below this low, targeting all this sell stops over here. You see this low, again we have this low, and all these low were targeted below this consolidation, right? So we have a false breakdown over here. After taking out this breakdown, market went up straight to take out all these high. So first we have taken out all these low over here. You see these all lows were taken. After taking out these low, market went up to take out all this buy side liquidity along with this equal high over here. So we have buy stops taken out here. Once again after taking out these high, market retraced back again, right, and this time it just went below these low over here. You can clearly see, so we went below these low over here, right. After taking out these low, again market was consolidating within this range. If you just look closely, we made this low और मार्केट में एक हाई फॉर्म हुआ और मार्केट कुछ टाइम के लिए उसी एक रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद इट जस्ट वेंट आउट बिलो दिस लो. So this was again a false breakdown below this range. After taking out this range, market कहाँ गया to hunt this buy side over here. You can see after taking out again these buy side liquidity, we have a consolidation, a very tight consolidation in this range if you just observe over here. And after taking out this और ये consolidation के वक्त प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे it created a relatively equal high over here. तो यहाँ पे क्या है, again a liquidity. So after taking out the low of this consolidation, if you closely observe, this low was taken, and after taking out this low, price just went above these relatively equal high, taking out the buy stop. So again there was a false breakdown over here, then a run above this high, then again consolidation, false breakdown, then run above these high, right. After taking out these high, again market went down to trade below these liquidity over here. If you just see, we have all these sell stops over pending over here. It just went with one nice sharp down move, taking out all these sell stops. Now moving ahead, so after making out this low, we just went above to take out this high, and again we were consolidating in a tight range over here. We have this high and we have this high over here, and it is consolidating within this range. After consolidation, again we have false breakdown over here, and after taking out this low, price went up to target these high over here, and even these liquidity, you see all this swing high over here just went above this high to take out all these relatively equal highs over here. So all these buy stops are taken out over here. And again after taking out this high, market retrace back and trading within this range. Again we are forming a consolidation.
अभी इसी चार्ट को अगर अच्छे से समझने की अगर कोशिश करेंगे, इफ व्हाट विल सी ओवर हियर, इफ यू जस्ट जूम आउट दिस चार्ट and look closely into this chart and try to observe what we are seeing over here. After this consolidation, we have taken this sell stops. After taking this, we went up to take out all this buy side liquidity. Then again we were consolidating, then a false breakdown and run up into these buy side liquidity. After taking out these liquidity, again there was a consolidation, false breakdown, then move into this liquidity, false breakout, then retracement, consolidation, false breakdown, a reversal, taking out all these highs over here after taking these liquidity. फिर से मार्केट में फॉल बैक हुआ. सो हियर वी टुक आउट ऑल दिस लो, क्रिएटेड अ न्यू लो. मार्केट में ये हाई लेने के बाद अगेन प्राइस ने क्या किया, ये लो हंट किया. अगेन वाइल मूविंग ऑन अ हायर साइड, बिफोर दैट कंसोलिडेशन, फॉल्स ब्रेकडाउन, वेंट अप टू टेक आउट ऑल दिस हाई. मीनवाइल यहाँ पे क्या हो गया, सारी लिक्विडिटी क्रिएट हुई. अगेन मार्केट में सारी लिक्विडिटी हंटी. सो ओवरऑल इफ यू जस्ट लुक एट दी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, पूरा प्राइस एक्शन क्या था, लो हाई एंड लो. सो पूरा प्राइस एक्शन, आई विल जस्ट मार्क विद अनदर कलर. पूरा प्राइस एक्शन क्या था, इट वॉज अ बेरिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, राइट. बट विद इन दिस बेरिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, वाइल मेकिंग आउट दिस लो एंड दिस हाई, सो दीज वर द एक्सटर्नल रेंज हाई एंड एक्सटर्नल रेंज लो. विद इन दिस रेंज मार्केट ने इंटरनल रेंज में भी बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट की, उनको हंट किया, बहुत सारे ट्रैप्स फॉर्म हुए. देयर वाज अ कंसोलिडेशन, देन फॉल्स ब्रेकडाउन, then falls breakout, again consolidation, falls breakdown, falls breakout. All these were happening within this range. After creating all this liquidity and traps, market went down to take this external range low. So price में on a higher time frame, the institutional order flow was basically bearish, and we have to wait for the price to retrace back, take out all this liquidity and then look for the trade over here or over here. But retailers क्या करते हैं, retailers ये सारे जोन में भी कंसोलिडेशन पे फॉल्स ब्रेकआउट करते हैं. एंड दिस इज हाउ एक्चुअली प्राइस डिलीवर्स इन द मार्केट. इफ यू रिमेंबर इनिशियली जब हम लोगों ने कोर कंटेंट में डिस्कस किया था अबाउट द मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम, हम लोगों ने सारी कंडीशन डिस्कस की थी, राइट. इफ यू रिमेंबर, अ कंसोलिडेशन, देन एक्सपांशन और अ रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, एक्सपांशन, then again retracement, consolidation, expansion, reversal, then again a reversal, consolidation, then expansion, a reversal. All these were already discussed in the first lecture if you remember, and this is how actually the price deliver in the market. And this is what we call as a market efficiency paradigm, where we have a huge speculative money or a retailer uninformed money, and against them we have a smart money. ठीक है. और ये स्मार्ट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, ये सारे ट्रैप्स फॉर्म कर रहे हैं सो दैट ये रिटेलर्स इन ट्रैप में फंस जाए. ऑल दिस फ्लैग एंड पोल, इवन यू कैन सी अ फ्लैग एंड पोल ओवर हियर. यू हैव दिस पोल, देन वी हैव अ flag, then there is a fake breakout above this pull, and there was a reversal, right. So all these things are actually forming within the external range high and low. All these are the internal range liquidity where the market makers are actually trapping the retailers. I have discussed all this in the ebook also कि किस तरह से external range liquidity के अंदर internal range liquidity में traps form होते. All these are discussed in the ebook. You can check out the link in the bio or on the Instagram. You will find a link of the ebook, and there you will get all these traps and how these liquidity are actually formed in the market. This is how a market maker trap the retailers through these patterns like fake breakout and fake breakdown, whereas the original institutional order flow was bearish basically, right. From this low, if you just see, from this low we made a retracement and again we made a new low. So the whole order flow is bearish, but within this there are all these traps which are forming in the market to trap the retailers. So I hope this lecture was very informative to make you understand कि किस तरह से ट्रैप फॉर्म हो रहे हैं और मार्केट का एक्चुअल जो बायस है, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस टू वेट फॉर द राइट लेवल जहाँ से आपको अपने एक्चुअल में ट्रेड प्लान करनी है. सो यू कैन सी आफ्टर दिस गैप डाउन यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था और सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फॉर्म हो रही थी. देयर वाज अ फॉल्स ब्रेकडाउन, देन देयर वाज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड मार्केट वेंट अप टू टेक आउट ऑल दिस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी. आफ्टर टेकिंग आउट ऑल दिस लिक्विडिटी ओवर हियर, मार्केट कंटिन्यू ऑन अ डाउन साइड टू और ओरिजिनल बायस जो था. सो हम लोगों को ये सारे ट्रैप्स में नहीं फंसना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दिस ट्रैप्स. जो अपना ओरिजिनल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है उसको फॉलो करना है, अपने बायस को या अपने नैरेटिव को बार बार चेंज नहीं करना है, सीइंग ऑल दिस ट्रैप. दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी. थैंक यू.